everyone, welcome to Art with Joshi and I am your mentor Shikha. Today we will create this beautiful candle. We are making it on the public request. Everybody requested in our previous Diwali videos to make this candle. So we will create this candle in very easy and simple steps. और आप इसको डेकोरेट कर सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी दिवाली डेकोरेशंस के लिए. So let's start. The material required for this is we require this tamba paper. This is a disco sheet or known as tamba paper, very easily available in the market in different colors. It's a shiny paper and a thin paper. We are using this to create this beautiful candle, and you can create it with any other color also. Any other paper also, it's your choice. Before we start, I would also talk about these Diwali challenge, all the things which we created. So you can always create these diyas, and we have made bandanwars, hangings, we have painted diyas. So we have done this Diwali challenge, 7-day Diwali challenge to decorate our homes. No need to purchase anything from the market. And I would request कि आप सब खुद बनाएं और अपने घर को खुद अपने हाथों से सुंदर सजाएं. So this is the paper. I am making a blue color candle, and scissor and fevicol is what we require. The paper and any golden paper to make the lid of the candle. What we will do is I will take vertically. I will take it 5 inches width. So this is a strip which we will take of 5 inches. Width, and the length can be depending upon your sheet. So my sheet is 19 inches. This is 19 inches and this is 5 inch. Now the steps are very simple. We'll first fold it. We'll again fold it and we'll keep folding it. So what I have done is I have just kept on folding it. Make the crease, these are important, and now open it. And we got these lines. Now what we will do is we will make it a fan. We'll fold it in the shape of a fan. So I have created it in a shape of a fan. So this is the easiest step. Now what we will do is, बहुत easy है ये कैंडल बनाना. हम one end को दूसरे end से join कर देंगे. That's it. Just paste the last two. Now what we will do is हम ये बाकी सब पे भी फेविकॉल लगा के join कर देंगे. आई नो आप अभी तक हमारे सारे दिवाली चैलेंज के चैलेंजेस ले चुके होगे. अगर नहीं लिया है तो यू आर मिसिंग ऑन इट. डू गिव इट अ ट्राई. और आपको कुछ भी मार्केट से स्पेंड करके खरीद के डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब कुछ आप खुद बनाओ. बंधनवार, शुभ लाभ, दिया, कैंडल्स. और ये डिस्को शीट से हम बना रहे हैं तो दिस विल गिव अ वेरी ब्यूटिफुल इफेक्ट. तो हमने सारे पेस्ट कर दिए हैं. सारे जो सेंटर में ओपन एजेस थे हमने सब पेस्ट कर दिए हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे एंड वी विल पेस्ट देम टुगेदर. इन सबको आपस में चिपका देंगे हम. सो हम इसको रखेंगे एक साइड. लेट इट ड्राई. हमारे कैंडल का बेस इज रेडी. लेट इट ड्राई एंड देन वी विल क्रिएट द टॉप ऑफ द कैंडल, जो हमारा लॉ ऑफ द कैंडल है. आई एम टेकिंग द सेम गोल्डन कलर शीट और उसको रैंडमली फोल्ड कर लेंगे एंड कट कर लेंगे. वी रिक्वायर जस्ट दिस मच पीस. अब हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी फोल्डेड है हमारा. अब इसमें हमें जो ऊपर
कैंडल का लिड बनाना है, कैंडल की जो लॉ बनानी है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। मैंने एक ड्रॉ की और हाफ ड्रॉ करना है, जब हम उसको कट करेंगे तो वो फुल हो जाएगा। और इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। बेसिकली वी नीड 4 पीसेस, बट क्योंकि ये बहुत थिन पेपर है, नो नीड टू कट देम 4 टाइम्स, जस्ट फोल्ड इट ऐसे, one on this side, one on that side, and we can easily cut them together to make it into a 4 pieces. Okay, so मैंने fold कर दिया। 4 pieces ready. See, I told you, we'll make half, cut it, and we'll get the full. Now we'll paste all 4 together. My 3D law is ready. My 3D flame is ready. Now what I'll do is, I have my candle. I will apply some glue on top. And I'll just paste it. Isn't it simple? So my beautiful candle is ready. We have to let it dry so that it doesn't come out. I'll just show you the blue candle, the green candle. I've made one more. So do give it a try, and of course don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for all the latest updates. So wishing you all a very happy Diwali. In fact, you can also create them at the time of Christmas. And don't miss our 7-day Diwali challenge and create all the things. Bye everyone. Take care, stay happy and stay safe.